So in the exam, after you see this कट सेक्शन, इसके बाद आपका डिसेक्शन बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी मोर ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स, इतकं सरळ नाक नसतं कोणाचं. पॅलेट, हार्ड पॅलेट, soft palate. So till now we have reached up to here, right? Superior concha, middle concha, inferior concha. This space over here, which is behind the nose, behind the oral cavity, behind the larynx, is the pharynx. This pharynx is divided into three parts. One which is against C1, because यहाँ पे थोड़ा सा skull का component रहेगा, is nasopharynx, and behind the nose nasal cavity. One which is behind the oral cavity and in front of C2 and C3 is oropharynx. So oropharynx, C2 and C3. And C4, C5, C6, in front of that is laryngopharynx, because here is larynx, behind larynx is, so this is laryngopharynx, this is oropharynx, and this is nasopharynx. Pharynx 12 centimeter long, extends from base of skull to C6. After C6, larynx becomes trachea, laryngopharynx becomes esophagus. So C6 is the cutoff line. Larynx becomes trachea and laryngopharynx becomes esophagus. मेरे बाद किसका लेक्चर है? हाँ? क्या बात, ऐसे नाम सुन के मुझे आनंद आता, जिनके ऊपर मैं दादागिरी कर सकता हूँ. Now what is there in nasopharynx, what is there in oropharynx, and what is there in laryngopharynx? सबसे अपन easiest से चालू करते हैं, laryngopharynx, उसमें कुछ नहीं रहता. तो when you look, you sit here and look in the front. You sit here and look in the front. So यहाँ पे क्या रहेगा मालूम है क्या, कि cricoid कार्टिलेज ऐसे पीछे से दिखेगा, कट सेक्शन है. आगे थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड ग्लैंड नहीं, ओके, थायराइड कार्टिलेज. सो यहाँ पे थायराइड, तो ये नहीं, इसको देखो क्रिकॉइड. सो पीछे से आप देखोगे तो आपको ऐसे क्रिकॉइड कार्टिलेज दिखेगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसका लैमिना. सो आप पीछे से देख रहे हो, ऊपर ये ऐसा एपिग्लॉटिस है, यूजलेस. मेरे को एपिग्लॉटिस का नाम सुन के ही गुस्सा आता है. इलास्टिक होने के बाद भी हिलता नहीं बिल्कुल. ओके, सो इन laryngopharynx, you are right now in laryngopharynx and you are watching the larynx in front. तो ये क्रिकॉइड का लैमिना दिखता है. उसके बाजू में you see, और देन ये नीचे इसोफेगस बन जाता है अपना laryngopharynx. So उसके साइड में पायरिफॉर्म फोसा, दोनों साइड में, लैरिंग्स के दोनों साइड में you see the pyriform fossa. Okay, so in the anterior wall of the laryngopharynx you see the larynx, posterior part of the larynx, cricoid का lamina, and on the side of which you see pyriform fossa.
which is also called as smuggler's fossa. Smuggler. Karl. I am not Karl. Karl शोभराज. झंडे मूवी देखा कि नहीं आपने? कितने लोगों ने देखा? हाथ ऊपर करो. क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. बघितला का? हाथ वर कर ना. मारणार होतो मी खडूवर. पार्ला में रह के झंडे नहीं देखते तो. सो कार्ल शोभराज नाम का एक इंटरनेशनल माफिया था एंड ही वाज कॉट बाय मुंबई पुलिस इन गोवा. तो मैं हम लोग जब छोटे थे ना तो वो जेल से छूटा था और वो पनवेल से गोवा गया वाया सातारा. तो मैं सातारा में रहता था तो हम लोग को इतना डर लगता था कि मैं तो खिड़की बंद करके सोता था घर का कि काल इधर से जाएगा करके. Used to kill people, take their passport, कुछ बहुत करता. तो smuggler fossa, because what happens is smugglers तो मिडल ईस्ट से आ रहा है, कोहिनूर हीरा लेके आ रहे तो इधर उधर चेक करेंगे, बट इधर कौन चेक करे? तो यहाँ पे अच्छा खासा फोसा है तो वहाँ पे रख देते थे, एक इधर एक इधर. 1 करोड़ 2 करोड़ 2 CR या 10 CR 10 CR 20 CR. मैं उसको स्मगलर फोसा नहीं बोलता, मैं उसको स्मगलर ENT सर्जन फोसा बोलता हूँ. बिकॉज उधर रखने का काम उधर मिडल ईस्ट में दुबई में एक जन इधर रखता है, फिर इधर से दूसरा ENT निकालता है. और उनको बोला रहता है रास्ते में पानी नहीं पीना. फिर एयर होस्टेस अपने ट्रेंड रहते हैं, वो पूछते सर वाटर, नो वाटर. फिर वो जाके पीछे होते हैं, वो पानी नहीं पी रहे. फिर वो इन्फॉर्म करते हैं, फिर हमारे CBI की टीम उधर पहुंच जाती है, पानी नहीं पी रहे आप, क्या हो गया? फिर इधर हमारा एक ENT सर्जन चेक करता है एयरपोर्ट पे और फिर उधर मिलते हैं. स्मगलर्स यूज्ड टू यूज दैट. ओके, अभी आप लोग बोलेंगे सर क्या बता रहे? जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो कभी फिश वगैरह जब खाते हैं, फिश नॉनवेज खाने वाले लोग, मैं बोलूंगा नहीं हाथों पर करो, लेकिन वो फिश का कभी कभी कुछ लोगों के इधर अटक जाते हैं, खाते क्या हो गया? फिर माँ बोलते केला खा, पानी पी, वो सब कार्यक्रम होता है. चलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. 1 2 3 start. So this anterior, in the anterior wall of the laryngopharynx is pyriform fossa, called as smuggler's fossa. When the smugglers used to keep diamonds previously, and they used to, while air travel, they don't drink water that time because then it is very difficult to trace it in the commode and all. So they say no eating, no drinking. ENT surgeon is equally involved. But now that, with reference to you, some of you who may be eating fish, that fish or bone, even non-veg, sometimes gets stuck here. और वो सब कार्यक्रम आपने किया. Better switch to vegetarian diet. ये सब ऐसा कार्यक्रम करने से अच्छा. तो फिर वो केला खाओ, ये वो. Now what happens is, आज एब्सेंट कौन है? स्नेहा. ये तो भाजेकर क्या हो गया कि पीछे का लाइन्स. ओके, ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये लोग जो एब्सेंट है, जो पढ़ते नहीं है, तो उनके पास ये पेशेंट आता है, कुछ तो स्टक हो गया, तो वो थोड़ा सा टंग रिट्रैक्ट करके उसको स्क्रैप करते हैं, निकाल देते हैं. अरे देखो ये तुम्हारे इसमें मिला. इन द फ्लोर ऑफ पायरिफॉर्म फोसा
In the floor of pyriform fossa lies internal laryngeal nerve, which is sensory to the larynx in the upper half. Sensory to the larynx, which is the afferent limb for the cough reflex. Cough peksha thaska. That happens now when we that water or anything hits the larynx. It's a protective reflex to prevent food and water from going into the respiratory tract, because anything, food or water goes in the respiratory tract, person dies on the spot. Khana khate khate. Now when people scrape the pyriform fossa hard, they damage the internal laryngeal nerve. So now the afferent limb of the cough reflex is gone. And then the next time the patient sits for eating, some water, some food goes in the larynx. The larynx doesn't, respond by closing the inlet. The larynx stays open, food goes in. कैसा लगा खाना कैसा? People die on the spot. The whole bronchial tree contracts. So one should not scrape the pyriform fossa hard while treating the patient. It can destroy the internal laryngeal nerve. Thank you. Now let's move up in the larynx. Let's move up in the larynx or pharynx. And the next thing you see here, is oropharynx. ओरोफैरिंक्स का भी एक ही कंटेंट है, इसके लिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। और वहाँ पे आपको ऑफ कोर्स ये टंग है, यहाँ पे टंग है, एंड यहाँ पे दो फोल्ड्स दिखते हैं। सो द ओरल कैविटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय दिस फोल्ड, which is called as palatoglossal fold. आप आपका मुंह ऐसा खोल के आप देखते रहेंगे ना, कभी पैरिंग्स हुआ है, टॉन्सिल हुआ है, तो व्हाट यू सी देयर करते खुद तो यूवुला दिखता है, यूवुला सॉफ्ट पैलेट, एंड ये पैलेटोग्लॉसल फोल्ड दिखता है, उसके पीछे पैलेटोफैरेंजियल फोल्ड होता है और बीच में टॉन्सिल होता है। So this palatoglossal fold is the boundary between oral cavity and oropharynx. What is behind anterior to palatoglossal fold? इसको मैं PG लिखता हूँ, palatogloss. This is PP, palatopharyngeal. What is ahead is oral cavity. What is behind is oropharynx. And between the palatoglossal and the palatopharyngeal fold is the palatine tonsil. कौन सा टॉन्सिल? पैलेटाइन टॉन्सिल। मेरे को ना One, two, three, start. Between the palatoglossal and palatopharyngeal fold is palatine tonsil. Now this is first time you are exposed to this word palatine tonsil. You must have heard people saying मेरे को ना टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हुआ नहीं है। टॉन्सिल आपके बॉडी में पहले से है, टॉन्सिलाइटिस हुआ है। इन लोग कैसे बोलते हैं मेरे को ना टॉन्सिल हुआ है, और उसको बोलो टॉन्सिल भी आपको एक नहीं है। इन द पोस्टीरियर ऑफ हाफ ऑफ द टंग देयर इज लिंगुअल टॉन्सिल, बिटवीन द पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफैरेंजियल फोल्ड इज pharyngeal palatine tonsil. Here there is opening of the auditory tube. Surrounding that is tubal tonsil, and here in the posterior wall of the nasopharynx is nasopharyngeal tonsil. So we have one lingual tonsil, one nasopharyngeal tonsil, two tubal tonsils and two palatine tonsil, total 6 tonsils. तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई अगर बोल गया ना मेरे को ना टॉन्सिल हो गए, कौन सा आपको पता है कि आपके बॉडी में 6 टॉन्सिल, एक नेजोफैरेंजियल,
एक लिंगुअल, दो ट्यूबल, दो पैलेटल. Okay, and this is the palatine tonsil. Okay, this whole ring is called as Walder's ring. देखो 1 2 3 4 tubal tonsil of other side, palatine tonsil, and again two lingual tonsil, because these are the two areas from which our body is allowing external environment to enter inside the body. और बॉडी स्टराइल, उसके अंदर बाहर का हवा और खाना पानी जो भी है वो जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है. इसके लिए ये प्रोटेक्शन. दिस इज द Walder's ring of tonsils. Okay. Tonsil is a different question which can appear in your exam. इसमें धक्कादायक क्वेश्चन आपको जो आ सकते हैं उसमें से एक है टॉन्सिल, दूसरा है पैलेट. पैलेट यू नो, पैलेट आ जाएगा ना शाम को. आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो एवरीथिंग नॉन पैलेटेबल लगेगा आपको. उसके बाद इतना आपका मूड चला जाएगा, बिकॉज पैलेट पढ़ता ही नहीं कोई. एट द एंड टाइम मिला तो अपन पैलेट रिवाइज करेंगे. टॉन्सिल आया सडनली, टॉन्सिल. तो यहाँ पे आपको ये टॉन्सिल दिख रहा है. दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर. ओके, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. ओके, एंटीरियर बॉर्डर देखो रिलेशन कितना अच्छा है लिखने के लिए. एंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू पैलेटोग्लॉसल फोल्ड व्हिच इज पैलेटोग्लॉसस. पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू पैलेटोफैरिंजियल फोल्ड. medial surface is related to the oral cavity, lateral surface is related to the pharyngeal wall. Upper end is related to hard palate. Okay, related to hard palate. And the lower end is related to the tongue. इतना तो लिख सकते हैं. फिर उसके बाद उसका ब्लड सप्लाई, द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी. टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी और बहुत कुछ है उसमें. टॉन्सिलर ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग पैलेटाइन, ऑफ असेंडिंग फैरेंजियल, ये सब है. मेन इज फेशियल आर्टरी. टॉन्सिल एंड यूटेरस आर टू प्लेसेस जिसका ऑपरेशन होने के बाद ड्यूरिंग द ऑपरेशन द क्लॉट, इफ द क्लॉट इज फॉर्म्ड. आप खुश हैं ब्लीडिंग स्टॉप हो रहा है क्लॉट के कारण? आप क्लॉट रिमूव करेंगे. आपके इधर ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉटिंग हो गया, तो आप क्लॉट रिमूव करते हैं? नहीं, ब्लीडिंग रुकता है. These are the only two places where when clot is formed we remove the clot. One, two, three, start. So tonsil and uterus, these are the only two places. While we are operating on that, if the blood clot is formed, we keep on removing the clot till the bleeding stops. The reason is at these two places the bleeding stops not by clot but by constriction of the arteries. And if the clot is formed, the arteries don't constrict, they are rich with blood supply. If the clot is formed, the arteries don't constrict properly, therefore we keep on removing the clot till the bleeding stops. And the bleeding in these two organs, tonsil and uterus, stops by constriction of the artery, not by formation of the clot. And therefore if clot is formed, the arteries will not constrict and the patient will keep on bleeding. और टॉन्सिल में पेशेंट घर पे जाएगा, वो ब्लीड हो रहा है, वो ब्लड खा रहा है, खून चूसने लगेगा वो अपना खुद का खून. ओके, so that is not good. So the doctor keeps on removing the clot till the bleeding stops. And bleeding will stop by constriction of the artery, not by the clot. Okay, clot will prevent the constriction and the bleeding will continue. Thank you. ये आपके फाइनल ईयर तक का क्वेश्चन है. आपका गायनेक में पूछेंगे, ENT में पूछेंगे.
Okay. Now we move on to nasopharynx. ये मैंने एंड में क्यों लिया nasopharynx? बिकॉज उसमें बहुत कुछ है. उसमें से एक आपने देखा ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब. ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब and surrounding that is tubal tonsils. 1, 2, 3, start. Opening of auditory tube. So auditory tube, one opening is in the middle ear, other opening is in nasopharynx, so that the eardrum has equal pressure on both the sides and it can vibrate. That's the reason. We all should remember that our nasopharynx is connected to the middle ear. ये कभी याद रखना है. Plane. नाक शिंक करते समय. When you have lot of सर्दी, common cold, thick secretions, and then आपको जो करते हैं उसमें आपने सडनली देखा रहेगा कि कान ब्लॉक दे. क्या हो गया? Because auditory tube has a mechanism. वो बोलते बाबा ये इन्फेक्टिव मटेरियल मिडल ईयर में जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा. ये क्या कर रहा है भाई? तो it just shuts it so that all that masala doesn't go in the middle ear and infect the ear. So that's a protective mechanism of the auditory tube. फिर थोड़ी देर बाद वो खुल जाता है. Okay, so this is a protective reflex. It's a protective reflex. Another thing, auditory tube, you must have realized it closes when you are in full speed or in the airplane. So what to do? Keep on chewing. Auditory tube opens when we are chewing, when we are so तो उसको लगता है सेफ जोन है, अभी ये नाक नहीं शिंकेगा. ओके, तो सेफ जोन में बच्चा रोने लगता है फ्लाइट में, बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उसको शुगर दो, जैसे वो शुगर टेस्ट करने लगता है ऑडिटरी ट्यूब ओपन होता है, बच्चा रोने का बंद होता है. उनको सब किसी को समझता नहीं, एयर होस्टेस को भी समझता नहीं इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है. यू विल गेट अ चांस टू टॉक विद द एयर होस्टेस. मैं आपको समझा सकता हूँ बॉयज कि ऐसा बच्चा रोने का क्यों. ये ना हमारा ऑडिटरी ट्यूब है, उसके बाद में ट्यूबल टॉन्सिल, तो ये क्लोज हो जाता है फ्लाइट में. तो ये जब शुगर देते हो तो बच्चा जब सॉल्व करने लगता है ना तो ओपन कर. वैसे मेरा नाम थैंक यू. उसके नीचे यू विल सी मसल्स, लिवेटर पैलेट, लिवेटर पैलेट, लिवेटर पैलेट. देखो ना, ऑडिटरी ट्यूब से सॉफ्ट पैलेट को जा रहा है, पैलेट को एलिवेट करेगा, लिवेटर पैलेट. थोड़ा सा मैं इसको ऐसे यहाँ पे लेता हूँ, लिवेटर पैलेट. देन यहाँ पे एक दूसरा फोल्ड है, एसपी, साल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड, साल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड. ये दिखता है. यहाँ पे एक छोटा सा और एक फोसा दिखता है, फोसा ऑफ रोजेनमुलर, फोसा ऑफ रोजेनमुलर, फोसा ऑफ रोजेनमुलर, वो ट्यूबल टॉन्सिल के बाजू में. इसके लिए मैं नेजोफेरिंक्स की एंड में सिखा रहा था. यहाँ पे दिखता है नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, दिखता नहीं है, वो रहता है, वो देख, वो वहाँ पे रहता है नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल. 1, 2, 3, start. Now people are only worried about this palatine tonsillitis, but in small children जिनको कंटिन्यूअस सर्दी रहता है, जिनका नाक ऐसा भरा हुआ रहता है, because of that constant nasal infection, the nasopharyngeal tonsil enlarges. Enlargement of the nasopharyngeal tonsil is called adenoids. और वो अच्छा खासा यहाँ पे एनलार्ज होता है. The sign will be कि वो बच्चा जब रात को सोता है तो ऐसा he'll breathe by mouth because ये पूरा ब्लॉक है ना. Then वो बच्चा, this child will sleep in the class because night he is not getting proper oxygen. So those who sleep in the class,
हॅलो दोषी झोपला नाही ना अच्छा सॉरी so they may have this now what happens the second feature at the base of the skull this is at the base of the skull यहाँ पे adenoid हो गया base of the skull the clivus it is formed by there is a primary cartilaginous joint there is a secondary cartilaginous joint over here there is a cartilaginous joint over here formed by occiput and greater wing of sphenoid it's a primary cartilaginous joint sorry I said secondary primary cartilaginous joint this joint unites and this base of the bone is formed if a adenoid enlarges this union is delayed we know primary cartilaginous joint is between epiphysis and diaphysis तो टाइम पे यूनाइट हो जाते हैं वैसे भी ये भी यूनाइट होता है ऑक्सीपिटल बोन यूनाइट्स विद ग्रेटर विंग नॉट ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड सॉरी बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड and nicely this base of the bone skull is formed. Now if this doesn't unite then there is a gap between them that will push the further bones anterior to it further and the maxilla will become like this and that person will have develop a adenoid face. A boy, small boy coming to the OPD and this teeth anteriorly, mandible posterior, face open, like this, adenoid face. So basically the adenoid has to be removed. Okay? And that remains like that. So adenoid face is worrisome. Okay? The pituitary which will be somewhere here behind this pituitary is formed posterior pituitary is just directly the continuation of the brain anterior pituitary is formed by Rathke's pouch which is from oral ectoderm वो यहाँ से ऐसे जाता है यहाँ पे Rathke's pouch first time you must have heard this word Ratkhes Rathke's pouch anterior pituitary is formed by Rathke's pouch which comes from oral ectoderm and posterior pituitary is formed from extension of the neuroectoderm and then they unite. Sometimes the Rathke's pouch fails to reach here वो बीच में ही suddenly उसको pharynx अच्छा लगने लगता है and then nasopharyngeal pituitary may be there okay थोड़ा सा ऐसा elevation type pituitary is the master of endocrine orchestra तो हमारे hypophyseal arteries इधर आके उसको सप्लाई भी करते हैं और आपने अगर आज का लेक्चर अटेंड नहीं किया फिर आप उधर लुक्स लाइक सम स्वेलिंग हियर एंड निकाल देंगे एंड देन द पेशेंट नेक्स्ट डे विल डाई बिकॉज हार्मोन जो सारे हमारे हार्मोन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ओके सो दीज आर द कंटेंट्स ये सारे के सारे दिखेंगे आपको everything you will see rather ये आपका एक main thing asked in the viva of head neck face in the soft parts ऐसा cut section लिखा था what is this okay what is this ये सब पूछते now two more things about pharynx. जरा pause करें. In pharynx, pharynx is a huge topic. मतलब you have to. These are the contents of the pharynx. Then layers of the pharyngeal wall, like mucosa, submucosa, pharyngobasilar fascia, muscular layer.
and buccopharyngeal fascia. Again I repeat, mucosa innermost from inner to outer, mucosa, submucosa, pharyngobasilar fascia, muscular layer and buccopharyngeal fascia. Fifth one, outermost is buccopharyngeal fascia. I repeat again, mucosa, submucosa, pharyngobasilar fascia, muscular layer and buccopharyngeal fascia. These are the 5 layers. Muscle layer, the layer number 4, has 2 types of muscles. 3 constrictors and 3 longitudinals. Constrictor muscles. See, there is superior constrictor. Look here. Superior constrictor, middle constrictor, inferior constrictor. So when we gulp the food, swallow, superior constrictor will constrict, push it down, then middle will, and then inferior. Inferior constrictor has 2 parts, thyropharyngeus and cricopharyngeus. The lowermost part works separately. Okay, the lowermost part works separately, and I'll discuss it when I talk about these muscles after. Okay. So now let us draw a diagram for the 3 pharyngeal muscles. Superior constrictor starts from the pterygoid hamulus, pterygomandibular raphe, which gets attached to the mylohyoid line of the mandible. Okay, from there it starts. Superior constrictor. Pterygoid hamulus, pterygomandibular raphe, mylohyoid line, superior constrictor. From the pterygomandibular raphe, one more muscle takes origin from the anterior aspect. Anybody? Hi, koi Mai Kalal, buccinator. So posteriorly superior constrictor, anteriorly buccinator. इसका मतलब आपने buccinator पढ़ा ही नहीं है. Middle constrictor takes origin. Now suppose this is styloid process. This is stylohyoid ligament. This is the smaller cornu of hyoid. Okay. Greater cornu body. Okay. Middle constrictor takes origin from the stylohyoid ligament, smaller cornu and greater cornu. Middle constrictor. Middle constrictor मतलब stylohyoid से उसका origin है. Stylohyoid ligament and hyoid bone. Middle constrictor. बराबर है ना? So superior will be here, middle will be here. Inferior constrictor ये जो मैंने डायग्राम निकाला है ना, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज विच इज बिलो. ये लैमिना है पीछे, साइड से देख रहे हैं. थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज. दिस on the thyroid cartilage there is oblique line. From this oblique line the inferior constrictor, sorry मैंने oblique line गलत निकाला, oblique line. From there the inferior constrictor takes origin, but which part? Thyropharyngeus part. And from the cricoid part, cricopharyngeus takes origin. Cricopharyngeus takes origin from the cricoid. One, two, three, start. So the pharyngeal muscles are superior pharyngeus, middle pharyngeus, superior constrictor, middle constrictor and inferior constrictor. Inferior constrictor has 2 parts, thyropharyngeus and cricopharyngeus. Why inferior constrictor has 2 parts? Because all these superior middle constrictors, they push the food down, even the thyropharyngeus component of inferior constrictor. Cricopharyngeus is like
a sphincter at the upper end of esophagus, because इसके नीचे esophagus चालू होता है. So therefore all the constrictors of the pharynx are supplied by pharyngeal plexus except for cricopharyngeus. It is supplied by the recurrent laryngeal nerve because it relaxes. सारे फूड को पुश करते हैं, but cricopharyngeus relaxes and allows the food to go into esophagus. Therefore, cricopharyngeus is not having the same nerve supply as that of other pharyngeal muscles, because all these constrictors, they push the food down. Cricopharyngeus relaxes and allows the food to go from pharynx to esophagus. Now pharynx में से ये ऐसे जब push करते जा रहे हैं, तो there are 3 longitudinal muscles which also reduce the length of. देखो ये ऐसा longitudinal muscles है, ये constrict करेंगे तो pharynx का length थोड़ा reduce होगा, food नीचे चला जाएगा. And that is done by 3 muscles. एक salpingopharyngeus आपने यहाँ पे देखा है, एक palatopharyngeus आपने यहाँ पे देखा है, और तीसरा है stylopharyngeus. Okay, styloid process से there is stylopharyngeus, there is styloglossus muscle, stylohyoid ligament, stylomandibular ligament. So that is the styloid apparatus. 2 ligaments के नाम आपको मालूम है, stylohyoid ligament, stylomandibular ligament. 3 muscles. Stylohyoid is a muscle also. Stylopharyngeus, styloglossus. Glossus goes to tongue, pharyngeus goes to the pharynx, and hyoid goes to stylo. Now where is the insertion? All these 3 muscles, they go behind and then they are inserted on the raphe, which extends from pharyngeal tubercle down. So all of them, they are inserted on the raphe, common raphe, inserted posteriorly on the raphe. Now suppose this is superior pharyngeus, this is middle pharyngeus, and this is inferior pharyngeus. क्यों निकाला मैंने ये? There are some things which pass above superior pharyngeus, and one of them is auditory tube and levator palatii muscle. I am just restricting to two things. Structure passing above superior pharyngeus. आप बोलेंगे ये क्या है above superior pharyngeus? देखो ये सारे मसल्स को आप पीछे देखोगे ना, बेस ऑफ स्कल के यहाँ से, तो ये बेस ऑफ स्कल है, ये pharyngeal tubercle है, और superior pharyngeus ऐसे है, फिर बाकी के सारे इस पे आके इंसर्ट होते हैं, रैफे पे, मिडल, इंफीरियर, लेकिन ये इधर एक गैप है, थ्रू दैट गैप द ऑडिटरी ट्यूब पासेस. वैसे ही सुपीरियर फेरेंजियस अगर ऐसा है, ये सुपीरियर फेरेंजियस है, तो उसके ऊपर मिडिल फेरेंजियस जाता है, उसके ऊपर इंफीरियर फेरेंजियस जाता है, तो इनके बीच में भी एक एक गैप है. वो गैप में से भी कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसमें से एक है स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड उसको सप्लाई करने वाली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. उसके नीचे, so this is between सुपीरियर और मिडल के बीच में क्या है मैंने आपको बता दिया. क्या है? स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. नाउ व्हाट इज देयर बिटवीन मिडल एंड इंफीरियर एंड व्हाट इज बिलो इंफीरियर? आपको याद रखना बहुत इजी है. सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी, inferior laryngeal artery. Superior laryngeal artery, inferior laryngeal artery. Internal laryngeal nerve, recurrent laryngeal nerve. Internal laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. Okay,
internal laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. Okay, clear? तो ये आप कैसे याद रखेंगे? नर्व इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाइज द अपर हाफ ऑफ लैरिंग्स, रिकरेंट लैरिंजियल सप्लाइज द लोअर हाफ ऑफ लैरिंग्स, सुपीरियर लैरिंजियल सप्लाइज द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स आर्टरी, inferior laryngeal artery supplies the lower. That's how you remember. Okay, so this is all about pharynx. नहीं ते चालू रहो, हे चालू करो. Okay, now I'm revising this for you fast. 1, 2, 3. इकडे वर. 1, 2, 3, start. So now we are discussing pharynx. Pharynx has three parts: nasopharynx, which is behind the nasal cavity in front of C1. Oropharynx is behind oral cavity in front of C2, C3. Laryngopharynx is behind larynx and in front of C4, C5, C6. Content of laryngopharynx: only one, piriform fossa, in floor of which is internal laryngeal nerve, should not be damaged while scraping a foreign body. In oropharynx there is only one content, the palatine tonsil, which lies between palatoglossal and palatopharyngeal fold. In nasopharynx there are many contents: opening of the auditory tube, the tubal tonsil, levator palatifold, salpingopharyngeal fold, fossa of Rosenmuller, and nasopharyngeal tonsil. It is not so big, I have showed an enlarged version. There are 5 coats in the wall of the pharynx: mucosa, submucosa, pharyngobasilar fascia, muscular coat, and buccopharyngeal fascia. In the muscular coat there are 3 constrictor muscles, 3 longitudinal muscles. The 3 constrictor are superior constrictor, which takes origin from pterygoid hamulus, pterygomandibular raphe, mylohyoid line of the mandible. Middle constrictor takes origin from styloid process, not styloid process, stylohyoid ligament, lesser cornu and greater cornu. Inferior constrictor has 2 parts: thyropharyngeus, which takes origin from oblique line of thyroid cartilage, and cricopharyngeus from the cricoid. All the constrictors are supplied by pharyngeal plexus except cricopharyngeus, which is supplied by recurrent laryngeal nerve because it relaxes when the other constrict. Amongst the 3 longitudinals, you can see 2 here: palatopharyngeus and salpingopharyngeus. There is stylopharyngeus, which you can see here, which is supplied by the glossopharyngeal nerve. So all the longitudinals are supplied of the pharynx are supplied by pharyngeal plexus except stylopharyngeus, which is supplied by glossopharyngeal nerve. Okay. Now these are the structures passing above and between the 3 pharyngeal muscles. Above the superior pharyngeus, all these muscles of course are inserted on the raphe behind. Above the superior constrictor is auditory tube and levator palate. Between superior constrictor and middle constrictor is stylopharyngeus muscle and glossopharyngeal nerve. Between middle constrictor and inferior constrictor is superior laryngeal artery and internal laryngeal nerve. And below the inferior constrictor is inferior laryngeal artery and recurrent laryngeal nerve. So this is pharynx. Applied anatomy of pharynx: multiple things. In enlargement of nasopharynx is called adenoids. A person has problem in breathing, that can lead to adenoid phases because the primary cartilaginous joint at the base of the brain does not, unite. Auditory tube: whenever we blow the nose, the infection can go to middle ear, so it as a protective reflective constricts. Palatine tonsil: there can be tonsillitis. Okay. And the piriform fossa. And the main applied anatomy is pharyngitis. And nowadays the commonest cause of pharyngitis is the acid which goes above and affects the pharynx. Thank you. So that's the main cause. आजकल pharyngitis ना infection से ज़्यादा acid से damage होता है.